نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت Every soul shall taste death صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. Death. What is death? It is a harsh reality. It is an inevitable truth. We all know that we're gonna die one day, yet we try to forget about it. Our deeds in this life determine our permanent life in the hereafter. If we have good deeds in this world, inshallah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jal will grant us paradise. Ameen. My dear respected Qibla, Pisab, Ulama-e Kiram, close relatives and brothers in Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I want to talk to you about my brother, Hafiz Hasnain Taraiq's death. May Allah Azza wa Jal be pleased with him. As you all know, Hafiz Hasnain was my little brother. He passed away on 6th April, the 4th of Ramadan, in a motorway bike, in a bike accident while he was going to college. The day he departed from our lives, my family and I are heartbroken. We are very sad and grieving at his loss. I had never even imagined in my wildest dreams that my little brother will leave this world in such a young age. Hafiz Hasnain's death has become a major reality check for all of us. None of us knows how much time we have left in this world. Yet we make plans as if we are going to live here forever. My brother was cheerful, happy and lively person. He was a Hafiz Quran and his qiraat was beautiful. I had a very beautiful bond with him, which I greatly miss now. The void he has left between us can never be filled. I still cannot believe he's gone. Life seems so bitter in his absence. However, putting his madness, putting my sadness aside, I know that he is in a better place now, closer to Allah Azza wa Jal. The amount of people who have prayed for his maghfirah is very heart-touching. It is very emotional for me to see that my brother's death has affected so many people, and how he has left a trace mark in all our hearts and lives. I think we should all take this moment to reflect on our lives and attitudes towards others. My dear brothers, life is very unpredictable and short. Hafiz Hasnain's death is a reminder for all of us to rethink and to reevaluate our life and try to be a better person. There is no point in having fights, having anguish towards others. We are nothing but travelers in this world, so we should live like travelers, live an obedient life, trying to please Allah Azza wa Jal, taking care of huququl ibad so that it benefits our life in the hereafter. My brother was never angry with anyone, nor he was never rude and still ill-mannered at all. His sweet attitude towards everyone is the reason why so many people are grieved at his loss. I want you all to think about this temporary life and how we are going to live in it. Are we living it according to the Quran and Sunnah of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, or are we just wasting in it? Worldly matters of no benefits. We still have time to change, improve ourselves and become better people.
I hope you all reflect on this matter. I pray to Allah Azza wa Jal to grant paradise to Hafiz Hasnain and his dearest friend Shahzeb, and have mercy on their souls. Ameen. I would like to thank all of you for coming here and making dua for him. I am especially thankful towards Qibla Pir Sahib, Sultan Fiyazul Hasan Sahib Qadri and Sultan Niyazul Hasan Sahib Qadri for coming to Pakistan for Hasnain's dua after performing Umrah from Saudi Arabia. May Allah Azza wa Jal bless us all and give us hidayah, and may He be pleased with us all. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulullah, as-salatu was-salamu alayka ya Habiballah. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, wa ma alayna illa al-balagh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ये एक भाई के साथ फीलिंग थी कि कैसा मेरा भाई था, प्यार करने वाला, मोहब्बत करने वाला, कुरान के साथ इश्क रखने वाला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातें पढ़ने वाला। एक भाई की जो फीलिंग थी वो आज ही सुबह मुझे जहन ने कहा कि मैं कुछ थोड़ा बयान करूँगा भाई के बारे में। तो अल्लाह करीम हसनैन तारिक को अपनी कुर्ब ख़ास में जगह ता फरमाए। और हाफिज़ ज़ैन तारिक माशाअल्लाह लंदन हमारा जो अल हिरा सेंटर है जो कि मेरा पीर साहब के ज़ेर साया वो अजीम शान दारा चल रहा है। वहाँ हमारी इतनी महफ़िल होती हैं, इंग्लिश की जितने भी ख़ताब होते हैं वो ज़ैन तारिक के होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह साथ ही इंग्लिश में दरसियात भी पढ़ रहा है, हाफ़िज़ कुरान भी है, यूनिवर्सिटी माशाअल्लाह पढ़ रहा है। अल्लाह करीम इसको लंबी ज़िंदगी नसीब फरमाए और दीन के लिए अल्लाह करीम इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हाफिज़ हसनैन तारिक के साथ साथ उसका बड़ा अजीम दोस्त था जिसका नाम शाहज़ेब था। जिस रोज़ सुबह ये एक्सीडेंट हुआ था तो हसनैन तारिक को एक और दोस्त ने कहा कि मुझे आप साथ ले जाएं। मेडिकली छुट्टी थी लेकिन फिर भी बेटे ने कहा नहीं छुट्टी नहीं करनी, मैंने जाना है। और अपने दोस्त को साथ लिया शाहज़ेब को। लेकिन उस बेटे के भी अल्लाह की बारगाह में ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी थी। आज हम सब उनके वालिदैन, उनकी वालदा, उनके ख़ानदान वालों के साथ इजहार तज़ियत करते हैं। अल्लाह करीम उस बेटे की भी बख्शे फरमाए। बस ये चंद बातें थी, आप सब की बहुत करम नवाजी। अब तशरीफ़ लाए, मेरे गम में आप शरीक हुए और ख़ुसूसी तौर पे किबला पीर साहब मदीना तो रसूल से तशरीफ़ लाए और सीधे तशरीफ़ लाए। कल चूँकि मस्जिद दरबार शरीफ में मस्जिद हुसैन में जुमा शरीफ भी है तो मैं बिला ताख़ीर आपसे जो है मुल्तमिस हूँ कि आप जो है अपने खूबसूरत बयान से हमारे दिलों को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। बड़ी मोहब्बत के साथ सुनेंगे माशाल्लाह सुबहानल्लाह। जितना आप बोलेंगे, मदीना से आप फैज़ लेकर आए हैं और उस फैज़ को हमने तकसीम करना है, लेना है। और लेना कैसे है? सुबहानल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सूरत में। तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सैयदी मुर्शदी या नबी या सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी